Good morning. I am Anil Agarwal, former Chief Manager, Punjab National Bank. So for IBPS clerk, there is a notification, and I advise you to wait for few days before you fill the form, because during these days we are covering all your queries, and all these videos I am placing in a playlist. This playlist link is available in description. Watch all these videos before filling the form so that there is no error in your form. Now, one question raised by you is, sir, how to fill the bank preference? Which bank we should prefer and how to decide? My suggestion is the top 4 banks should be given the first 4 preferences. And these are Bank of Baroda, Punjab National Bank, Canara and Union Bank. You should give top preference to these banks. Even you can include Indian Bank also among us, these top 4 to 5 banks. So first preferences, the topmost preferences should be of these banks. And depending upon the number of branches around your city, you can decide. And then remaining 6 to 7 banks you can give in any order depending upon your liking. Now question arises, say there is an A in these banks in your area or 0 vacancy in your area. Should you still fill these names? My answer is yes. Because these banks are bigger in size and there is a high probability they may have higher vacancies. We are talking of probability. Because the final vacancies matters. Say for Bank of Baroda, they may give the vacancies. Punjab National Bank can increase the vacancies. Canara Bank can increase the vacancies. Union Bank can increase the vacancies. Indian Bank can increase the vacancies. So if you give these preferences and if vacancies increases, you will be considered for those vacancies. Now another question comes in our mind. Say I give a bank which is NA as my first preference and no vacancy come in that bank. What will be the fate of my application? Selection is not based on your preference. Selection is based on your merit position. So you will be selected. And since there is no vacancy in your first preference bank, the next preference bank will be considered for allotment. So by giving the preference of a bank where 0 vacancy is there or any vacancies are there is not affecting your selection. But you are taking a chance, and if vacancies come in these banks and these are bigger banks, you may be allotted a bigger bank. This is a common mistake. By seeing the number of vacancies, sometimes we fill the name of the bank where highest vacancies are there. And then we are allotted to that bank. And then later on we come to know that there were vacancies in other banks also. And I could have got that bank also because my merit position was high. So since you have not opted for that bank, they will not allot that. Okay. So it is always preferable that the bigger size banks you should keep at a higher position. So this order can be any, but I think Bank of Baroda, PNB, Canara, Union Bank, maybe even Indian Bank can be given top 5 preferences and rest 6 can be placed thereafter. That should be your order of preference, and rest there can be some specific choices by certain people. Certain people may like A bank, B bank or C bank. They can fill their preference. This is up to you. I am giving just my view, and rest depends on you. You are free to choose, give your preferences. I am not saying you should definitely fill these preferences, but my experience is by filling the names of bigger bank, high probability is there you may land up in these banks, and sometimes some facilities are also better in these banks as compared to others. God bless you all. अब यही बातें हम हिंदी में करेंगे. IBPS क्लर्क का हम फॉर्म भर रहे हैं. मैंने आपको एडवाइस किया था कुछ दिन आप वेट करें, और अलग अलग आपके इश्यूज पे हम वीडियोस बना रहे हैं. इसकी मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है. फॉर्म भरने से पहले पूरी प्लेलिस्ट जरूर देखें. फॉर्म भरने से पहले पूरी प्लेलिस्ट जरूर देखें, उससे आपको फायदा होगा. अब आज के वीडियो में हम कवर कर रहे हैं प्रेफरेंस ऑफ बैंक कैसे करें.
देखो, प्रेफरेंस ऑफ बैंक करने का मेरा मानना ये है कि जो टॉप 4-5 बैंक्स हैं उनको आपकी टॉप प्रेफरेंस में होना चाहिए। जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा है, पंजाब नेशनल बैंक है, केनरा बैंक है, यूनियन बैंक है, इंडियन बैंक भी इसमें ले सकते हो कैटेगरी के अंदर। इनको आप टॉप 5 प्रेफरेंसेस में दीजिए। चाहे आपके स्टेट में वैकेंसी NA है, चाहे वैकेंसी 0 है, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि हो सकता है जहां NA है वहीं पे आपके स्टेट में हाईएस्ट वैकेंसीज आ जाए, जहां 0 है वहां बढ़ जाए, क्योंकि बड़े बैंक है, ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी। तो जो पॉसिबिलिटी है वैकेंसी बढ़ने का जो पॉसिबिलिटी है ज़्यादा वैकेंसीज आने का, बड़े बैंक में ज़्यादा है। तो अगर हम पहले से बड़े बैंक को प्रेफरेंस में लेके चलेंगे, हमें फ़ायदा होगा। अब कई लोगों के मन में ये प्रश्न आता है कि मैंने NA वाला भर दिया, 0 वाला भर दिया और लास्ट तक वैकेंसी नहीं आई, तो मेरा क्या होगा? देखो, जो प्रेफरेंस है उसके आधार पे आपकी सिलेक्शन नहीं हो रही है। सिलेक्शन आपकी हो रही है आपकी रिटर्न में कितने नंबर हैं और आप अपने स्टेट में मेरिट पे कहाँ पे है, वो तो आपकी सिलेक्शन है। पर सिलेक्शन होने के बाद आपकी प्रेफरेंस के आधार पे आपको बैंक अलॉट हो रहा है। अब मान लीजिए आपने जो टॉप मोस्ट बैंक हैं या बड़े बैंक हैं उनको भरा ही नहीं प्रेफरेंस में, और आप मेरिट पे टॉप पे हैं, आप सेलेक्ट भी हो गए, तो आपको वो बैंक नहीं मिलेगा। पर आपने प्रेफरेंस दी हुई है तो आपको वो बैंक मिल जाएगा। अब मान लो वहाँ पर आखिर तक वैकेंसी नहीं आई, या नीली रह जाती है, या 0 ही रह जाती है, तो भी आपके कैंडिडेचर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट प्रेफरेंस पे चला जाएगा आपका, फिर उसके नेक्स्ट प्रेफरेंस पे चला जाएगा। पर अगर आपने वो प्रेफरेंस भरी ही नहीं तो वो बैंक आपको नहीं मिलेगा, मीन्स ऊपर नहीं भरी, क्योंकि जो आपकी टॉप प्रेफरेंसेस हैं उसको वो प्रायोरिटी देंगे। तो इसलिए हमेशा ये सेफ रहता है कि बड़े बैंक्स को हम टॉप प्रायोरिटी पे लें, क्योंकि वहाँ कई बार फैसिलिटी भी बेटर है और ये भी चांसेस ज़्यादा हैं कि आपके घर के आसपास उनकी बहुत सारी ब्रांचेज हों। तो जब पोस्टिंग होगी उसमें भी आपको बेटर पोस्टिंग मिल सकती है। तो मेरा मानना यह है कि जो आपका पैमाना होना चाहिए बैंक प्रेफरेंस भरने का, बड़े बैंकों को भरिए, उनको ऊपर प्रेफरेंस पे रखिए, वैकेंसीज के हिसाब से मत भरिए। जिस बैंक को आप पसंद करते हैं, जिसमें जाना चाहते हैं, उसको हायर प्रेफरेंस दीजिए। वैकेंसी जितनी जिस बैंक में उतनी ही रहेंगी, आपकी सिलेक्शन तो आपके स्टेट में कितनी वैकेंसी है उसके आधार पे हो ही जाना है। ठीक है, तो आपको वो बैंक तो मिल ही जाएगा जहां पर वैकेंसी है। तो इसकी आपको टेंशन नहीं लेनी है कि मैं वैकेंसी वाइज भरूं। काफ़ी लोग गलती करते हैं, जहाँ हाईएस्ट वैकेंसीज हैं उसको फर्स्ट प्रेफरेंस देते हैं, फिर वो मिल भी जाता है बैंक, और बाद में कहते हैं सर ये तो मुझे चाहिए नहीं था बैंक, ये मुझे मिल गया। आपने खुद ही ऑप्ट किया। प्रेफरेंस का मतलब है वो आपका कौन से बैंक में जाना चाहते हो, आपकी चॉइस पूछ रहे हैं, तो वही चॉइस दीजिए ना, उसको नंबर ऑफ वैकेंसी से लिंक मत करिए, क्योंकि वैकेंसीज आर सब्जेक्ट टू चेंज। वैकेंसी कभी भी बदल जाएंगी, और जितना बड़ा बैंक है उतनी ज़्यादा वैकेंसी आने की हमेशा संभावना रहती है। वर्ड है संभावना। आप कुछ लोग आर्गुमेंट करने लगेंगे, सर नहीं 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 उस बैंक में ज़्यादा आई है, वो छोटा था वो बड़ा है। हो सकता है ये, पर बड़ा बैंक है मीन्स ज़्यादा काम है, ज़्यादा काम है मीन्स ज़्यादा ज़रूरत हो सकती है। तो हम पॉसिबिलिटीज़ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, सो गॉड ब्लेस यू ऑल।